Watch excerpts from the interview with actor Prashant Gupta. So talk about the making of Ashram, the sets, the stories, setting, rehearsals, workshops, actors, interactions. Walk us through behind the scenes of making of Ashram. Traditionally what happens in Mumbai or in LA, New York, is casting directors are the ones who reach out to you for a certain role or a certain part. And I was reached out by a very famous casting director in Mumbai for this role. And it just struck me once again that why has a police officer's role come my way? But when I realized that this is Ashram, which has been seen by over 1 billion people in the country, I knew it's an opportunity that I can't pass. So I gave the audition, and fortunately it worked out well, and I have no idea why the gray shaded or the bad stuff comes my bad stuff in the sense of character, because I'm not really like that in reality. I'm a pretty good guy. And Prakash Jha liked it. I was very fortunate he liked it, and in a few weeks I was cast. He called me into his office, and he took an introduction of me and to understand where I come from, how I know the show, what I feel about it. And truthfully, I hadn't seen the show at that time. I saw the show after I got cast in it. But I had one workshop. Honestly, I was lucky. The acting coach on the show, she loved my sort of take on the character. And that's basically what I do. When I become a part of something, I prepare myself so well that I just have fun with it. I surrender myself to it. I imagine myself on the set, on the location, and I just go with it. And when you're comfortable with the language and when you test your voice enough with the dialogues, then it comes through organically. And the most important thing is preparation. Just be prepared. Don't leave anything for the last minute. Don't be complacent about your work. And I guess that was the process for me during the show, throughout the show. Of course, working with Prakash Jha is something that can give anybody a nervous sort of energy in their body. But he enjoyed what I was doing and I enjoyed his direction, and it worked out well. Great. So a blue-eyed boy born and raised in a first world country, a New Yorker, gives up his privileged, comfortable life here, travels to Mumbai, looked up with skepticism, and is labeled an outsider. Talk about the hardships, the roadblocks in your journey as an actor. Now that you have given the Hindi film industry 15 years, what has changed? My whole concept of life has changed. For most, 15 years in Mumbai is a big deal. And I've done 15 films in these 15 years. A lot of people don't know about that because many of them haven't released in mainstream sort of American movie theaters. A lot of the A-list Bollywood films that become famous in America, which is what I've grown up watching. I mean, I grew up in the 80s and 90s in New York and LA, and that is how I became starstruck, how I became fascinated with Bollywood, all the film star concerts and the shows. And these are the reasons why I would want to be an actor myself at that time. And when I reached Mumbai in 2007, the multiplexes were just coming up. And the whole concept of six-pack abs and really sort of heads-on with, front page, page 3 PR, and paid PR, and a lot of these exercises were coming up in Bombay. And I was an absolute newbie to the city. I didn't know any part of Mumbai. I had no contacts. I would just pick up all the trade newspapers and magazines, figure out who's making what, how to get email addresses. Acha, Mumbai is not a city that works on email at all. It works on SMS, and at that time, WhatsApp had not even come into the scene. WhatsApp came in 2-3 years after I was living in Mumbai. So it was very hard. I was a complete outsider. And I had already done my bit in New York. I had done some modeling, some theater. And by the time I moved to Mumbai, I was already a married man. I had my firstborn. So for me to struggle like a teenager or a college boy or a fresher from some small town in India, it wasn't possible. I had to make a means. I had to make a living. I had to survive. And it was very hard. It was very difficult emotionally, financially, mentally.
more than anything mentally, because rejection in Mumbai is very to the face and very hardcore. It's not a respectable rejection. It's a very It breaks your heart. तुम किसी लायक नहीं हो रिजेक्शन, और तुम्हारा होगा नहीं रिजेक्शन, यू डोंट फिट द बिल। ये एक वहाँ पे लाइन है जो शुरू में मैंने सुनी तो मुझे समझ में नहीं आया व्हाट दिस मीन्स, यू डोंट फिट द बिल। और बहुत ही कट थ्रोट, मतलब आप भीड़ में खड़े हो और आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे एंड दे विल जस्ट टेल यू यू कैन गो होम, यू कैन गो होम, यू कैन गो होम, यू कैन गो होम। एंड आई एम थिंकिंग ऐसे कैसे चलेगा, मतलब ये तो You मतलब never अंदर भी नहीं lost बुलाते। it. You never lost it like with them, like. No, you lose it here. You can't lose it with them. Because if you lose it with them, then you're done. You have to control yourself here. I've lost it a lot here and here. And I've paid the price of that clinically, medically, in every way possible. But you can't tell them कि नहीं आप बदतमीज हो, आपको बात करने का तरीका नहीं है। क्योंकि शहर बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है। अच्छाई भी जल्दी फैलेगी और बुराई भी जल्दी फैलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपकी सुन लेंगे और आपको बोल देंगे कि बदतमीज तुम हो, तुम किसी लायक नहीं हो, वापस आना मत और हम तुमको फ़ोन नहीं करेंगे। किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा नुकसान हुआ। और तुमको ये बोलने वाले भी वो लोग हैं जो 18-19 साल के हैं। दीज आर कॉलेज फ्रेशर्स हु आर असिस्टेंट्स to the big casting directors. The big casting directors in Mumbai have now reached a point where they don't think of themselves as less than यश चोपड़ा और करण जौहर, कि तुम्हारी तकदीर तो हम बना रहे हैं। And no offense to them, but this is where they are, most of them, in their heads. They are offensive. I would say that is very offensive. And they don't even have to be offensive. They've hired people to be offensive. You know, but gradually I reached a point where one film after the other, after the other, after the other came, and people realized, yeah, he's a talented actor, he's a good actor. And then they start talking to you respectfully. वो सब समय समय की बात है। आपका काम लोगों को अच्छा लगने लगा, आप अच्छे लगने लगे, आपके बारे में अखबारों में पढ़ना चालू किया, तो प्रशांत से प्रशांत सर हो गया। और फिर उम्र भी बढ़ती गई तो दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये 24-25 साल का नहीं रहा, अब 30-35 का हो गया है, 35-36 का हो गया है, फिर अभी थोड़ा और बड़ा हो गया उससे। तो दे स्टार्ट addressing you as sir, and then once you do enough work in Bombay, then you can expect कि आपने जैसे वो KBC में पड़ाव होता है ना कि आपने 6 लाख क्रॉस कर दिया है, अब आप उससे नीचे नहीं कर सकते, अब आपने 20 लाख क्रॉस कर दिया है, उससे कम नहीं कर सकते। तो आपको ये पड़ाव क्रॉस करने पड़ते हैं इंडस्ट्री में, कि जिसके नीचे आप गिर तो सकते हो लेकिन आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। एंड देन दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू लिटिल बेटर। पर टाइम की बात है, 2 फ्लॉप दे दो, 2 साल नजर नहीं आओ, फिर आपको भूल जाएंगे। You still have to audition. ऑडिशन का ऐसा है कि मुंबई का पूरा कल्चर बदल गया है। एक ज़माना था कि जब आप 2-3 फिल्में कर लेते हैं और थोड़ा बहुत आपका नाम हो जाता है तो डायरेक्टली आपको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर फ़ोन करेगा कि वी वांट यू फॉर दिस फिल्म। आजकल बॉम्बे में काफ़ी हद तक हॉलीवुड की तरह हो गया है, नॉट कम्प्लीटली, लेकिन अच्छे एक्टरों को ऑडिशन देना पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द A-list स्टार्स और द चिल्ड्रन ऑफ द A-list स्टार्स, वो सिस्टम तो वहाँ पे है, उन लोगों को ऑडिशन नहीं देने पड़ते। लेकिन हॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स को आज भी स्क्रीन टेस्ट देने पड़ते हैं, बड़े बड़े स्टार्स को। आई मीन नेम्स दैट वुड सरप्राइज यू, दे हैव टू गिव ऑडिशंस। तो आई स्टिल हैव टू ऑडिशन, बट द प्रोसेस ऑफ द ऑडिशन has changed. A lot of times I don't have to audition. I've been called in directly by the director or producer, and they'll describe a character to me and they'll ask me if I want to do it, if it's something interesting to me. And a lot of times the casting director will call me and one-to-one explain the character to me and see if it's something I want to do. तो वो जो भीड़ में खड़े होने का चक्कर है वो खत्म हो चुका है। पर आपने वो भीड़ में खड़े होने के रोल्स किए हैं, because you said you were married very young, your family was there, your wife, your kids, and you had to make very responsible choices and conscious choices कि आप कैसे रोल कर रहे हैं, because at the end of the day you want to bring home the money also. Initially I have to tell you the driving point was the work, because the money was so low कि उससे कुछ होता भी नहीं। वो मनी इतना लो था कि उससे कुछ नहीं होता। उससे ये था कि आपके 5 दिन का गुजारा भी अगर हो जाता तो हो जाता। लेकिन it was a question of चलो ये काम तो कर लो ताकि आप इस काम का इतना प्रचार कर सको, तो इस काम से ये काम मिल जाए, इस काम से ये काम मिल जाए। वो कड़ियाँ जोड़नी थी मुझे। फॉर्चुनेटली आई कम फ्रॉम अ फैमिली कि जहाँ पे रहने के वांदे नहीं थे और खाने के वांदे नहीं थे। लेकिन अल्टीमेटली
you only have so much brain capacity and heart capacity to tolerate कि ये कब तक चलेगा. Very true. लेकिन भीड़ में खड़े होने के ऑडिशंस कुछ टाइम बाद ख़त्म हो गए और भीड़ में खड़े होने के सीन तो बहुत पहले ख़त्म हो गए थे. वो मैंने अमेरिका में भी किए और मैंने इंडिया में तो नहीं किए भीड़ में खड़े होने के सीन्स. उसको इंडिया में जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा बोलते हैं. आई हैव बीन एन एक्स्ट्रा इन सम 1 or 2 Hollywood films. One was a film with Nicole Kidman and Sean Penn called The Interpreter. That was like 16-17 years back. I was in college just starting out. तो मुझे लगा कि चलो हो सकता है निकोल किडमैन दिख जाए, शॉन पेन दिख जाए, डायरेक्टर दिख जाए. दिन के $100 मिल रहे थे तो चलो मैंने कहा भीड़ में खड़े होते हैं. लेकिन ऑनेस्टली वो 12 घंटे का काम था और मैं 3 घंटे में सेट से निकल गया. जब मैं निकला सेट से तो शाम को मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन आया कि यू लेफ्ट द सेट, यू वोंट बी गेटिंग पेड एंड वी विल नेवर कॉल यू अगेन. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये काम तो मुझे वैसे भी नहीं करना. तो Of course. जो काम करना ही नहीं है तो आप कॉल भी मत करना उसके लिए. क्योंकि मुझे तो पता है कि इन माई हेड व्हाट वाज आई थिंकिंग व्हेन आई वाज गोइंग टू बॉम्बे. एनी एक्टर हु कम्स टू बॉम्बे फ्रॉम न्यूयॉर्क और फ्रॉम नागपुर और पटना, पुणे, बिहार, he is dreaming of becoming the next Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan. Nobody's thinking कि I'll become the next Paresh Rawal or Anupam Kher. They might by default. But everybody's dreaming of being a Salman or a Shah Rukh or an Amitabh Bachchan. That's what I dreamt of. But you'll go on to become an Irfan or a Manoj Bajpayee or like today's examples of Pankaj Tripathi, Nawazuddin Siddiqui. So वो ultimately क्या होता है वो आपकी तकदीर है. पर आप बनने तो जाते हैं वही जो नंबर 1 है. पर भीड़ में तो ये लोग भी खड़े हुए हैं. भीड़ में तो ये लोग भी खड़े हुए हैं. So how did your love affair with Bollywood begin? You were very young when you shifted your base to India. Was it the same India you had heard stories about, imagined it, seen on screen, or was it mysterious and disorienting? How many times did it break your heart? It was scary every single day. मुंबई एक ऐसा शहर है जो क्या है कि आई ओरिजिनली बिलोंग टू जयपुर. सो माई एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया वाज समर हॉलीडेज न्यूयॉर्क से जयपुर, जयपुर से न्यूयॉर्क. और अच्छी फैमिली से बिलोंग करना मतलब एक राजाशाही लाइफ थी जयपुर में. तो इंडिया का जो एक परसेप्शन था वो ये था कि यहाँ पे कंफर्ट है, आराम है, लाइफ अच्छी है. मुंबई में मैं किसी को जानता नहीं था. फॉर्चुनेटली माई वाइफ वॉज फ्रॉम मुंबई. So my initial comfort was that I got to live with her parents. लेकिन और किसी को नहीं जानता था मैं शहर में. तो there was complete discomfort. It was heartbreaking every day. क्योंकि न्यूयॉर्क या LA या UK वाले जो बॉम्बे के बारे में जानते हैं, they know कि हाँ कहीं बैंड्रा में एक मन्नत करके घर है जो शाहरुख खान का है. एक जुहू में एक घर है अमिताभ बच्चन का. और एक फिल्म सिटी है गोरेगांव में. तो यार मुंबई की लाइफ तो इज सो रेड कारपेट, स्पॉटलाइट, बॉलीवुड स्टार्स. और यहाँ पे जितने भी शोज आप देखते हैं अमेरिकन इंडियन टेलीविजन पे या उनके अमेरिकन जो कॉन्सर्ट्स होते हैं यहाँ पे न्यू जर्सी में होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं, कैलिफोर्निया में होते हैं. तो द परसेप्शन ऑफ बॉलीवुड इज़ वेरी स्टारडम, ग्लिट्सी एंड वेरी यूफोरिक. पर वो जो शहर है वहाँ पे हज़ारों लाखों ऑटो रिक्शा की कैकों से आप परेशान हो सकते हैं. और BST की बस आपको परेशान कर सकती है. वहाँ के सड़कों के खड्डे आपको परेशान कर सकते हैं. वहाँ की बारिश जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही रिस्की भी है. और वहाँ के जो स्टूडियोज़ है जहाँ पे आप ऑडिशन करने जाते हैं वो किसी 5-10 वाले की बिल्डिंग में नहीं है. वो काफ़ी स्टूडियोज़ तो झोपड़पट्टियों में है. Oh, really? लोगों को नहीं मालूम वहाँ पे किस किस तरह के ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे सड़कें भी नहीं बनी हुई है. वो अनसीमेंटेड, अनकॉन्क्रीट वाला लैंड है जहाँ पे छोटे छोटे चॉल टाइप स्टूडियोज़ हैं. उनके अंदर एक स्पॉटलाइट, एक ग्रीन स्क्रीन है और आपको स्क्रिप्ट दे दी जाएगी कि आपको ये पढ़ के आपको ये सीन करना है. एंड दिस इज़ व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट. अब तो ये है कि हाँ प्रशांत सर ये फिल्म है, ये रोल है, 5 दिन पहले स्क्रिप्ट मिल जाएगी, उसकी तैयारी का मौका मिलेगा. लेकिन it's a ruthless way of testing an actor. A lot of times there'll be 10 other actors in the room while you're performing. तो ये सब कल्चर थोड़ा पहले से सुधर गया है. लेकिन it wasn't easy. It was very cutthroat.